आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ रिफ्रैक्टरी हाइपोग्लाइसीमिया ऑफ न्यू बॉर्न। अगर बेबी में GIR जो है वो 12 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट से चल रहा है और ब्लड शुगर अभी भी नॉर्मलाइज नहीं हुआ है तो वील कॉल इट हैज़ रिफ्रैक्टरी हाइपोग्लाइसीमिया। दूसरा, अगर GIR लास्ट 7 डेज से बेबी जो है वो GIR पे है और ब्लड शुगर जो है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो अभी तक स्टेबलाइज जो है वो नहीं है, देन वील कॉल इट एज रिफ्रैक्टरी हाइपोग्लाइसीमिया। नाउ फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रिफ्रैक्टरी हाइपोग्लाइसीमिया को अब हमने कैसे मैनेज करना। सबसे पहले हम इसको तभी मैनेज कर पाएंगे जब हमें इसके कॉजेज़ पता होंगे। इसके 2 प्राइम कॉजेज़ होते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज़ दैट हाइपर इंसुलिनिमिक हाइपोग्लाइसीमिया एंड सेकेंड इज नॉर्मो इंसुलिनिमिक हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि एक कंडीशन जिसमें इंसुलिन ज़्यादा की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया, एक में इंसुलिन लेवल नॉर्मल है बट हाइपोग्लाइसीमिया। तो जिसमें डिक्रीज इंसुलिन इंक्रीज इंसुलिन लेवल्स हैं, ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं? एक तो वन इज कंजेनिटल। कंजेनिटल हो गया कि देर इज अ म्यूटेशन इन द जीन्स विच रेगुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द पेनक्रियाज, राइट? तो उसकी वजह से हाइपर इंसुलिनिमिक स्टेट है। दूसरा हो गया विच इज एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इज बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शंस, राइट। जैसे कि बेबी इन एडमिट है तो बच्चे को सेप्सिस है, उसकी वजह से हो सकता है। देन बच्चे को बर्थ एनॉक्सिया है, उसकी वजह से हो सकता है। डायबिटिक मदर का बेबी है, उसकी वजह से हो सकता है। IUGR बेबी है, उसकी वजह से हो सकता है। एंड पॉलीसाइथीमिया की वजह से हो सकता है, राइट? तो दीज आर द प्रोबेबल कॉजेज ऑफ हाइपर इंसुलिनिमिक हाइपोग्लाइसीमिया। इन कैटेगरी इज ऑफ नॉर्मल इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया। जब इंसुलिन लेवल्स नॉर्मल है तो प्राइमरीली फर्स्टली आपको ये सोचना चाहिए कि काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, यानी कि कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी हो सकती है, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो सकती है, देयर कैन बी इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, हेरिडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस हो सकती है। इफ द बेबी इज एनॉमलस, राइट, एनॉमलीज हैं, तो यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ द बेक विद वाइडमैन सिंड्रोम दैट कैन लीड टू द कंजेनिटल कॉजेज ऑफ द hyperinsulinemic resistant hypoglycemia. So friends, when there is refractory hypoglycemia, we need to find out the cause, right? And we'll send the investigations now to find out ki whether it is a state of hyperinsulinemic hypoglycemia or it is a state of normal insulinemic hypoglycemia. So critical sample is taken, right? Critical sample is taken. Now what is critical sample? Critical sample is taken means the blood is to be withdrawn at the time when there is hypoglycemia, that is the blood glucose level is less than 40. At that time we'll take out the samples. First of all, we'll send the samples for serum insulin and C-peptide levels, and then we'll think of these counter regulatory hormone deficiency. We'll send growth hormone levels, cortisol levels, thyroid profile will get done. To rule out inborn error of metabolism, we'll do the serum ammonia, serum lactate levels, we'll get free fatty acids done, blood ketones, we'll send the sample, we'll get it done the TMS also to rule out inborn errors of metabolism. And also we'll take out the sample and we'll send the sample, urine samples for ketone bodies for reducing substance and for GCMS, right? Also get done the genetic testing, right, to rule out any mutations. After all the samples are withdrawn and reports are there, so we can categorize refractory hypoglycemia to be hyperinsulinemic hypoglycemia. अगर ये 4 नॉर्म्स जो हैं वो फॉलो होंगे, इसमें क्या है, यानी कि 4 क्राइटेरियाज आर फुलफिल. वन इज इंसुलिन लेवल्स इज मोर देन 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर. एंड व्हाट हैपेंस इन most of the cases of hyperinsulinemic hypoglycemia, the insulin level already falls between the 5 to 10, right? Second is free fatty acids are low, they are less than 1.5 millimoles per liter. And another is blood ketone levels are also less, or that is the plasma hydroxybutyrate level is less than 2 millimoles per liter. Fourth, the one that is very important, like if we'll give IV glucagon at the dose of 0.1 milligram per kg of the body weight of the baby, there is inappropriate glycemic response. And what is this inappropriate glycemic response? That the blood glucose level, normally what happens,
कि blood glucose level must rise by 30 milligram per deciliter in 20 minutes of giving IV glucagon, but it does not happen in case of hyperinsulinemic hypoglycemia. All drugs that we use in refractory hypoglycemia. अगर refractory hypoglycemia after the blood samples are withdrawn, it's very important. First drug that we try is basically hydrocortisone, और हाइड्रोकॉर्टिजोन देने से पहले कॉर्टिजोल सैंपल्स यानी कि क्रिटिकल सैंपल्स नीड टू बी विदड्रॉन, राइट. और हाइड्रोकॉर्टिजोन हम देते हैं एट द रेट ऑफ 2.5 मिलीग्राम पर केजी पर डोज आईवी हम बीडी देते हैं. What hydrocort does? Hydrocort is a steroid that decreases peripheral utilization of glucose. Second is by increasing gluconeogenesis, and third is by increasing the glucagon effect. Lekin it has certain side effects. The side effects are like it can increase blood glucose levels. There can be hyperglycemia, and the second is it can cause hypertension. Right? Diazoxide is basically a potassium channel agonist जो pancreatic cells पे act करता है and decreases the release of insulin. It is given orally in the dose of 5 to 15 milligram per kg per day in 3 divided doses. But जो इसका main side effect है that is fluid retention, so it has to be given along with the hydrochlorothiazide because there are chances of fluid retention and cardiac failure. Second thing is that कि diazoxide takes at least about 5 days for a positive effect to be seen, right? So in the condition when diazoxide is not able to control the steady levels of glucose, then we'll try the octreotide. Octreotide is a somatostatin analog. Okay? It's a somatostatin analog. What it does, it decreases insulin secretion, and it's a long acting one, right? It's a long acting one. The dose is 5 to 35 microgram per kg per day, and it can be given either 6 hourly or it can be given either 8 hourly in divided doses, right? It can be given either subcut or it can be given either IV, but the major side effect is tachyphylaxis, so you need to consider that. Last drug that we try is the glucagon. We give glucagon at a rate of 0.2 milligram per kg, right, per dose. And what is it ki it can be given either subcut or IM, right, or IV. But the maximum dose is 1 milligram only. In infant of diabetic mother, the dose can be 0.3 milligram per kg per dose, right. Again, the maximum dose will be 1 milligram only. You have to take into consideration that once the effect of glucagon is off, then baby becomes hypoglycemic again. So IV line have to be kept in situ. The third thing is that for in case if you are using the glucagon, the glycogen stores have to be adequate, right? Adequate glycogen stores have to be adequate. So DG, avoid in case of IUGR. So if small for gestational age babies or growth restricted babies, you have to avoid both diazoxide and glucagon. These two drugs are need to be avoided in these conditions. If after the medical treatment still the steady levels of blood glucose are not being achieved, then you have to consider the PET scan, right? Then you have to consider the PET scan to identify the focal lesions of the pancreas, right, to find out the other possible causes.